So hello guys, welcome back to my channel, and this is the episode 5 of Yash Talks About. And today we are gonna talk about meditation, spirituality, and peace. बहुत हो गया ये channel पे peace and mental health and all, but still, I just want my main aim is to motivate you guys to start meditating, nothing else. So here it comes, the podcast on meditation. And today, my guest is my friend Karthik Mudaliar. And I yeah, I know him like 1 month or so. He's my new friend. And yeah, I had first experience with this guy. He just trolled Friends, I guess so. And I was like, no, Friends is best. You know, you don't know, you watch Friends, Friends is best. And this guy was like, okay, huh, let's agree to disagree, bro. So that's what I love about this guy. He's too intellectual and yeah, he do like क्या करते हैं अभी उससे पूछते हैं. So bro, please can you introduce? Hey guys, I'm Karthik, and I'm not gonna say my surname because none of you are gonna understand it anyway, और मेरे को भी pronounce करना नहीं आता. So I watch movies, I read books, I am a huge sitcom nerd, and I meditate and follow certain aspects of spirituality, and that's all I do. That's all I do every day. So yeah, meditation and spirituality has like changed me completely in a good way, not in a bad way, and it is amazing. It's blissful, and I'm loving it. What motivated you? What was your story? Why you started meditating? So lockdown happened, and when there was no lockdown, when our lives are normal, we don't stop. We just live. जब बाहर जाते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ. तो हम लोग रुकते नहीं है. We don't stop and we don't think about ourselves, about stuff. We don't have our own perspective. We just listen and we just stay quiet and nothing else. So when lockdown happened, I realized that I started thinking. I mean, not overthinking. That's a bad thing. But I started thinking, and I started thinking about what I'm doing. Am I doing it right? Am I living my life the best way I can? And all that thoughts started arising, and I was like, no, I have to change what I'm doing. I have to change. I have to improve because this is a really unhealthy lifestyle. So first of all, I didn't know how to start. So what I did is I started reading books essay to improve myself. And while reading books, I stumbled upon this one book. It's written by a Vietnamese monk. He's like Dalai Lama, but from Vietnam. And he has written this book. His name is Thich Nhat Hanh, and he has written this book, Being Peace. This is an amazing book, and I recommend everybody to read it because in this book, he talks about what is meditation. This is the first time I actually learned what meditation is. इतने टाइम से मेरे को लगा कि बस सांस अंदर सांस बाहर बस इतना ही. But it's nothing like that. It's he explained the effects of meditation. He explained what it means to be happy, how you can be happy, and in this way, I started meditating, and soon I turned my way into spirituality. This is my story. So my story was like, bro, I am not a reader. Like I am putting this out. Like I am not a reader kind of a guy. I am like listener. I can watch things. अगर watch वीडियो देख सकते तो मैं पढ़ूँ क्यों? That's my अभी अभी तक तो वही है. अगर एक बार कभी बुक का कीड़ा लग गया तो पता नहीं. पर अभी तक तो यही है कि if I can watch videos तो ऐसे. So I was just stumbling upon ऐसे काय कुछ भी कर रहा है. I was just binging beer biceps, I guess so, because कुछ तो ऐसा बाल के बारे में देख रहा था and you know YouTube's algorithm इधर से उधर जाते ही है. But still I was on beer biceps channel and I watched that meditation वाला podcast और meditation वाला video how to meditate and stuff. तो बोला ठीक है. तब तब मेरे को लगा कि ओके इसमें क्या है, मतलब 15 मिनट करने का है ना. क्या सांस अंदर सांस बाहर, एज यू सेड कि सांस अंदर सांस बाहर से इतना क्या ही होता है. तो आई वॉच दिस इन अक्टूबर नवंबर 2019 और मैं बोला नहीं मेरे को करना नहीं है. हाँ, फिर माय लाइफ was like bro giving me challenges since Jan and stuff like बहुत stress, एग्जाम है ये वो, पर्सनल लाइफ ब्रो, ब्ला ब्ला ब्ला. आई वाज लाइक नहीं, कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में, शांति चाहिए. ऐसा नहीं चले, ऐसा ओवर थिंकिंग ये वो सबके बारे में सोचने का है. पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इतना परसेंट आएगा कि नहीं आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जेई अच्छा नहीं गया है. लाइक नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा. सो आई गेस बियर बाइसेप्स बिंज किया वही
फिर से एक बार कि कैसे करते हैं. And in that video, I guess Ranveer has said that एक बार एक दिन में तुम लोग को नहीं होएगा, कम से कम 20 दिन वगैरह करो तो तुम लोग को आदत होगा एंड यू विल फील समवॉट डिफरेंट. एंड आई वाज लाइक चल बंदा बोल ही रहा है तो सुन के देखते हैं अभी कितना क्या ही होगा. मेरा भी 15 मिनट ही जा रहा है दिन का, तो आई वाज लाइक ओके चल करके देखते हैं. एंड देन आई वाज पहले पहले 5 दिन वाज लाइक कुछ हो रहा नहीं है, लाइक बस सांस अंदर सांस बाहर, नथिंग एल्स. मेरे को कुछ मतलब वो सांस अंदर सांस बाहर हो रहा है पर दिमाग में और बहुत थॉट्स आते जा रहे हैं. एंड आई डिड read about it again. मतलब I said I am not a reader, but I was like नहीं ये क्या है, मेरे को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, बाकी लोग को होता है मेरे को क्यों नहीं हो रहा है. तो I read about it and it was like कि 5 दिन में नहीं होता, 5 दिन में तो ये तो कुछ भी नहीं है, लोग सालों साल करते हैं, तो 5 दिन कुछ भी नहीं है. So you need time up to have no thoughts in your mind while meditating. And मेरे को तो भी 10-15 दिन वो थॉट्स आते जा रहे हैं. एंड आई गेस इट वाज लाइक अ मंथ और सो, 1 month 5 days और 1 month 3 days कि कुछ वो पहली बार कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, एकदम शांत है. ओके ब्रो, दैट्स व्हाट पीस फील्स लाइक. गाइस अगर तुम लोग नहीं कर रहे, यू वोंट अंडरस्टैंड इट, जस्ट स्टार्ट दैट थिंग. एंड पहले पहले लगेगा क्या है, that experience is too different. And मेरा कैसा पता है, I can't meditate in front of anybody. Like अभी समझ माँ है तो I can't, मतलब नहीं, फिर मेरे को ऐसा लगता है कोई तो देख रहा है, कॉन्शियस रहता है. हाँ कोई तो देख रहा है, तो I can't meditate in front of anybody. If मैं घर पे अकेला है तो I can. And मेरे घर पे मॉम डैड दोनों काम करते, तो I am अकेला इन घर, so no problem about it. So that was the thing कि oh great, that feeling was too cool. So तू कैसे मेडिटेट करता है, एकदम जमीन पे पेट के एकदम ऐसा मांडी विंडी डाल बहुत बड़ा के? मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है. you don't need to do all that. भाई पैर पहाड़ों पे दुखते हैं, जाके हिमालय में पैर दुखता है नीचे बैठेंगे तो योर concentration goes, जब भी पैर दुखता है तो there, so you it's all fucked up. You have to, you can, wherever you're comfortable. I sit in this chair I'm sitting right now. The only thing you have to make sure is that your back is upright. Relax नहीं हो रहा है, upright रहना है. तो पीछे कुछ सपोर्ट रहना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर एक पिलो रख लो, पिलो के ऊपर बैठो तो ऑटोमेटिक होता है. मुझे मालूम नहीं कैसे होता है पर होता है, बैक सीधा हो जाता है. और मेडिटेशन मैं शुरू में तो मैं कुछ भी करता था, मैं गलत ही करता था शुरू में, पर फिर भी मजा आता था. उसके पीछे भी साइंस है ब्रो, ऐसा नहीं है कि हाँ, बैकबोन स्ट्रेट की, दैट्स योर नर्वस सिस्टम. या एंड इट्स आल्सो गुड फॉर योर पोस्चर. तू 15 मिनट ऐसा टेढ़ा आंकड़ा बैठेगा तो तेरा पोस्चर खराब होएगा, तो इट्स गुड फॉर योर पोस्चर आल्सो. नहीं पोस्चर का भी बात नहीं है, व्हाइल मेडिटेटिंग आवर बैकबोन इज आवर नर्वस सिस्टम, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज. इसके वजह से वो एकदम स्टेबल रहे, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी, तेरा बैक सीधा है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मिथ से. एंड आई फील डूइंग इट फॉर लाइक 6 months, 6 नहीं कितना हो रहा है, 10th month चले, 9 months नाउ. कि नाइस, गुड, एकदम मस्त फीलिंग है, एकदम चुम्मेश्वर फीलिंग. if you want to adopt any habit like meditation or anything, the most toughest day is the first day. और जितना जितना दिन होता है उतना easy होता रहता है. So if you do 1 week properly, you can do 2 weeks आराम से. If you do 2 weeks आराम से, you can do 1 month आराम से. Just don't take breaks. तो फिर वापस से साइकिल शुरू हो जाता है. फिर तो आदत हो जाता है. It becomes a part of your daily routine. तेरे लाइफ का पार्ट बन जाता है, फिर तेरे को अलग लगता ही नहीं है, तेरे को ऐसा कुछ वर्क नहीं लगता, बस तेरा रोज का है वो. Being consistent is what? Like देख, अभी मेरा YouTube चैनल का देख ले, in Jan to अगर तू ले लेगा जून जुलाई तक I was inconsistent. मेरे मन में आ रहा है तो मैं वीडियो डालेगा, नहीं डाल. अब when I am putting consistent videos on Monday and Friday, I am growing. There is growth of like मतलब 900,000% ऐसा ग्रोथ दिखाता है मेरे को चार्ट्स में. And coming to the charts, guys, you guys don't subscribe. 65% of you guys have not subscribed yet. क्या कर रहे हो यार, फुकट है ना. ऐसा लाल बटन को ऐसा ग्रे करके जाने का, बाजू में घंटी दबा देने का, ऑल करने का, मस्त शेयर करने का, बस. Okay, so coming to the point about what are the differences you noticed, specific differences कि इसके पहले मैं ऐसा था, इसके बाद में ऐसा हो गया.
after meditation? A lot of meditation, a lot of differences. First thing is you can see it physically. Your skin ka quality will improve. I don't know how to say it, but it improves. Dry नहीं होएगा, वो सब नहीं आएगा, because your overall tension, your nervous, your anxiety कम हो जाता है. So it, and your hair will stop falling. If you are, that's what I was facing, hair fall, like most people our age do. But this will help that. This will stop it because you're not stressed and everything because you're meditating, and it gives you a clarity. Our mind is a chaos. एक टाइम पे जिलियन थॉट्स रहते हैं, हम लोग ध्यान भी नहीं देते सब थॉट्स को. जब हम मेडिटेट करने के बाद उठते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, एकदम काम रहता है, तो हम सब थॉट सुन सकते हैं. तो इट गिव्स यू क्लैरिटी, इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव कि ये गलत किया मैंने उस दिन, ये मेरी गलती थी, पर मैं चिल्ला रहा था किसी और पे. इट it helps you get clarity. So that's the basic thing which I noticed, and it helped me a lot. So coming to the point of spirituality, कि मतलब meditation है क्या? Coming to some advanced things, कि meditation है क्या? Meditation is all about कि एक बार mental peace होगा, you will get different perspective towards life, और फिर that's what I call spirituality, and that's what meditation is all about, reaching that stage. और उसके भी ऊपर होता है, जैसे कि last podcast I did with someone who has 55 years of experience. Like she is doing it since 55 years, and being in an older generation, they are like they think while meditating they think about just gods and stuff like Krishna. The auntie I brought, Maushi, Surekha Maushi, she thinks about God. But we, our generation is somewhat different. They don't revolve around gods. They don't think about gods too much. So like when I meditate, I think about my goals in my life. I think about what मेरे को क्या करना है, आगे जाके क्या करना है. So that's what I think about. And for being spirituality भी दो अलग हो सकते हैं. Like जहाँ पे लोग बोलते हैं कि एकदम भगवान 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 वाला, and then comes the secular spirituality, which you know more about. Yeah, which you follow. First of all, what do you think? What is secular spirituality? there is nothing bad in doing that God wala thing. Even I believe in God because it helps me. Whatever helps you, you do it. So God wala, I don't know a lot, so I can't talk about it. But you can research, you can find it in the internet and stuff. In the earlier days, it was only God wala, like God wala spirituality. They used to follow spirituality to achieve enlightenment. जो बुद्धिज्म में बोलते हैं ना निर्वाणा, like God level वाला जैसे कुछ. Even I don't know properly, but वो लोग God level पे जाने का try करते हैं एकदम. But to follow that, they used to be disciplined. और वो discipline जो है वो certain, they used to follow certain sets of rules, guidelines to lead their lives. So ये discipline आने के बाद they used to advance in those spirituality. That's what their belief. But in the 18th century, we are modern people, so most of us don't believe in all that. Like I'm not gonna say if I believe or not or anything because we are not here to do that. I'm just saying that most people don't do it. So what they used to do is they used to get those things which they used to follow, the guidelines, the sets of rules, which can affect our life in our day-to-day life in this modern world, which can help us in leading a better life, not worrying, not getting angry, not being materialistic. तेरे को संन्यास लेने का जरूरत नहीं है. नहीं है. तेरे को संन्यास लेने का जरूरत नहीं है. तू 5 BHK में रह के भी स्पिरिचुअल बन सकता है. तू सब एंजॉय करने के बाद भी स्पिरिचुअल रह सकता है. देखो स्पिरिचुअलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है. स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वो उनका डेफिनेशन है. तो फिर डिफरेंट पीपल लोग डिफरेंट बोलेंगे. तू जब फॉलो करेगा तेरे को भी डिफरेंट लगेगा स्पिरिचुअलिटीज मीनिंग. बट you can pick certain aspects of spirituality, you can discard certain aspects. It's totally up to you. There's nothing wrong in that. Yeah. Secular spirituality is basically not like achieving enlightenment and stuff, but leading your life the best way you can, leading your life the good way, not having any stress, any anxiety, not getting angry, and all that. Being bliss, being chill. Chill समझ लो यार, being chill बोलते हैं spirituality को अपने terms.
That's what it is. And I can हाँ talk about लाइक कुछ टेंशन ही नहीं है ब्रो, एकदम it. हाँ. एकदम जिंदगी मस्त है, मेंटोर जिंदगी जी रहे, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। या Yeah, राइट, मेंटोर जिंदगी भी ऐसे नहीं कि तेरे को कुछ उखाड़ना ही नहीं है, यू हैव गोल्स एंड हाउ, लाइक यू से हाउ यू कैन लिव योर लाइफ टू द बेस्ट यू कैन, exactly. what you can do to make your life the best. Yeah. So yeah, that's what spirituality is all about. But secular spirituality, I read something. There is kindness, there is goodness. Uh, that comes to meditation. You being rude, because I was rude. I was damn rude. Like We मुंह start पे मुंह we पे start rude. thinking that हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग सब लोग से ऊपर है क्योंकि हम लोग को सब आता है, मतलब मेडिटेशन करते हैं हम लोग पीसफुल है, Hmm. तो हम लोग सब लोग से ज्यादा पावरफुल, मतलब ऐसा कुछ समझते हैं. तो वी so this spirituality helps you get humility Hmm. कि तू कुछ भी नहीं है, तू Yeah, तू yeah. इतने भी बराबर That's नहीं है, what I तेरे को was कुछ उखाड़ा coming नहीं to. है. या go on sorry. Yeah. Sorry. So I was saying that I was too rude. I was like मुंह पे disrespect. छोड़ो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है. And then a person comes to my life, and she was like, no, it's wrong. It's being rude is so wrong because you're like hurting someone's feelings. So being rude is so wrong, and that's what that person taught me. He no bro. And when I think about it while meditating, when I think about it, how that person has affected my life, and I'm really thankful to that person because yeah, that person has done a lot for me. And वही मेडिटेशन करके तेरे को समझता है कि ब्रो वही किसने तेरे लिए क्या किया है, और कौन तेरे साथ कब था, और तू कब गलत है तू कब सही है. यू नो अबाउट इट व्हाइल मेडिटेटिंग. यू हैव क्लियरर विजन. आई एम नॉट सेइंग आई एम मेरे को बहुत क्लियर है, मैं गलत होगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा. आई एम सेइंग बट कभी कभी व्हेन आई मेडिटेट आई गेट सम थॉट कि ब्रो ये किया था मैंने, डिड आई डू करेक्ट थिंग exactly. और वाज आई रॉन्ग. एंड हाँ, सो दैट्स व्हाट हेल्प्स यू इन लाइफ कि ओके ठीक है मैं ये गलती किया तो इसको सुधार सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट मेडिटेशन गिव्स यू, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू बी काइंड. बिकॉज आई मैं बोला वैसे कि आई वाज रियली रूड I, पर्सन, रियली ऐसा. तो अभी समय सामने से मेरे को कुछ बोल रहा है ना, मेरे को अरे चल मेरे को बात नहीं करना, ऐसा मुंह पे बोल के चले जाता. so if you're तो being rude, नाउ आई नो a, कि a good trick बोल. is a good trick if you're being rude, if you know you're being rude, is put yourself in that guy's perspective. ऐसा सोच कि अगर मैं जिसने इसको बोला, अगर उसने मेरे को ऐसा बोला तो मेरे को कैसा लगेगा. That's how you stop being rude. That's another trick of spirituality. Yeah. That's what that person taught me कि ऐसा सोच तो तेरे को समझेगा. Yeah, and thank you if you're watching. That person is watching. Thank you for being there. Okay, so yeah, that was spirituality, secular spirituality, kindness, goodness. Falling in love comes And into also, spirituality, guys. I was reading about it yesterday. You sent me an article about it. Falling in love comes under spirituality. I was like, bro, great. But not falling in love with someone, falling in love with yourself or falling in love with your goals or जो भी है, but falling in love comes under spirituality. yeah, I'll talk a little bit what I've learned from spirituality, just to give you an idea about what can you learn, and you can follow it. So, okay, the first thing is how not to worry. We worry too much, right? हम लोग 24 hours कुछ ना कुछ के बारे में worry करते रहते हैं, सोचते रहते हैं. So this is basic flowchart kind of thing which I follow, which I read somewhere, which I think can be helpful even if you are not gonna follow spirituality. ये video से you'll get this information. So, like you are worrying, okay? Think if you are in a problem or not. Think if you're in a problem or not. If the answer is not any problem, if you are in no problem at all, then why are you worrying? Think about it like that. Chalo, let's say you have a problem. Let's say you have a big problem. And the next question is, can you do something about it or can you not do anything about it? It's out of your control. There are certain things which are in your control, which you can control. There are certain things which you cannot control. So you can't do anything about it, and why you worry? Ask that question. Can you do something about it? Can you not do something about it? If you can do something about it, let's say it's a problem in which you can fix if you do something about it, then why are you worrying? Do it now. There's no point of worrying. There's no need of worrying.
If you cannot do something about it, Right. you cannot do something about it, then there's no point of worrying. So in our life, there is no need of worrying. There's no need of thinking about the past, thinking about the future. Thinking about the future, let's say you are eating your lunch and you're thinking about what you're gonna have for dinner. We do that. We think like what are we gonna have for dinner. You're not enjoying your lunch. You're not Yeah. concentrating on your lunch. Then kya fayda? It 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 is applicable in every aspect of your life. You're not supposed to think about the past because you can't do anything about it because you cannot do anything about the future because किसी ने देखा नहीं. There's this amazing saying, Zen saying, the past is past, yesterday is past, the future is unknown, tomorrow is unknown, but today is a gift. That's why it's called present. Live your life right now. If you're watching this video, watch this video and not think about anything else. Just watch this video. तू दोनों काम आधा अधूरा कर रहा है, सोच रहा भी आधा है, वीडियो भी आधा अधूरा देख रहा है. एक चीज एक बार में एक चीज करने का. That's one of the things spirituality is. That's right. Yeah, that was too energetic, bro. And like I was thinking, before this podcast, I am going. I have some problem. Problem नहीं बोल सकते, ऐसा है कुछ तो चल रहा है. I was like, ये बराबर बोल रहा है रे. मैं फालतू में वरी कर रहा था. अगर if I can do something about it, I can. So yeah, Really simple. thank you. Shouldn't be a problem. Spirituality. You will thank spirituality. You will thank me, maybe, or yourself if you start following spirituality, because spirituality teaches you how to deal with basic things which you fixate over a lot. We in our lives have a lot of holes. In our life, we have a lot of holes. Some people try to fill those holes with materialistic stuff, like ये गाड़ी लेनी है, ये अच्छा बड़ा घर लेना है, ये बैग लेना है, ये शू लेना है. You tend to fill that hole through material stuff. Some people fill that hole with a different person. Some people fill that hole with a girlfriend or a best friend, with love. They tend to do that, and when they leave, when this certain person leaves, फिर hole तो आपस से hole बन गया ना वो. But your thoughts, you yourself will never leave you. Your happiness will never leave you. तू चाह के भी नहीं छुड़ा सकता उससे. Your thoughts are yours. So spirituality teaches you Yeah. how you can fill those holes with yourself, by yourself. And that's another thing. Another thing is we tend to get jealous a lot. हम लोग किसी और का लाइफ देख के इतना एनवियस होते हैं. लाइक उसके पास समझ मर्सिडीज है उसके पास और तेरे पास खाली बाइक है. तू बाइक पे खड़ा है और मर्सिडीज पे बैठा है और तू सोचेगा कि यार शायद मर्सिडीज है, मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, मेरे को मर्सिडीज चाहिए. नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस. तू बाइक पे बैठा है, कोई तो चल रहा है रास्ते पे, गर्मी में चल रहा है कोई तो दूर. वो सोचेगा यार काश मेरे पास बाइक होता, मैं चल रहा नहीं रहता. एक और पर्सन है जो सोच रहे हैं कि मेरे पास पैर नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, काश मैं चल रहा होता. So we have everything we need to fill ourselves. We just don't look in the right direction. We just look at everybody else's life. We don't concentrate on what we have. We are privileged people. अगर हम लोग कोई गांव में रहते थे या फिर हम लोग कोई अंडर डेवलप कंट्री में रहते थे तो हम लोग को कुछ और ही अलग वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते थे. पर हम लोग इतना प्रिविलेज, इतना कंफर्ट लाइफ है, तो हमें ये अक्नॉलेज करना चाहिए. वी नीड टू अक्नॉलेज दैट what we are living is a great life and we don't need to be envious from anyone else. That's another teaching I learned from spirituality. That's what spirituality teaches you. That's what spirituality teaches you. To acknowledge what you have with yourself. Like if somebody's interested after listening to our talk, you can search more about it and you want to start. Like there are various places you can start. The first step to start is acknowledging that the way you are living your life is wrong. Be brave, you have to be strict and you have to acknowledge that I need spirituality और मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ. ये acknowledge करें तो ये first step. But if you want to explore more, there are lots of ways. I read books because that is something I like to do, and I read books and I gain insight, I gain knowledge from books. I can even recommend a certain book to everyone, but that's not necessary. If you don't like books, don't read books. Listen to podcasts like Yash said. Yeah. Like Yash said, listen to podcasts or listen to watch videos about spirituality. There are hundreds of people who are spiritual leaders. Jay Shetty, Gaur Gopal. Not only spirituality, पर देखो, पढ़ो.
learn देखो, something, पढ़ो, get knowledge, learn करो, not about initiative only लो. super. That's what we talk about. It was a great talk, Karthik. Thanks for you solved my problem right now. You know, I was thinking about something, and bro, if I can do something about it, I can. Okay. Yeah. So thank you for that flow chart you gave me. Yeah. Because बहुत दिन में थोड़ा हो रहा था मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ. So thank you. You solved my problem and still had a great talk with you. And with some of you guys, अगर एक बंदा भी मोटिवेट हो रहा है नेक्स्ट ईयर करने लग रहा है मेडिटेशन, दैट्स सक्सेस फॉर अस एंड दैट्स सक्सेस फॉर माय इनिशिएटिव टुवर्ड्स द मेडिटेशन एंड या It's even good for you. दैट्स ऑल. Yeah, it's even good for you. Or actually, it was a great talk. Thanks for coming, Karthik. And Great to that's be it, here. guys. Do subscribe. Yeah, do subscribe to my channel for more awesome content. बहुत जन आ रहे हैं अभी, बहुत जन के साथ अपना बात चल रहा है, and more people are coming on this podcast. And I assure you, you will get the quality content on this channel. So do subscribe और कुछ भी करो, पर वो सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए. एंड डू लाइक, उसके क्या है मेरा कंटेंट और लोगों तक पहुंचेगा. एंड या दैट्स इट. मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट और वीडियो.